From the distributions, we can start why we may be understanding, discussing, knowing distributions. And let me tell you, by distribution, we mean that the pattern of data, how they may appear. If you recall our initial classes, we got some random data, raw data, then we found mean, we found correlation, we found standard deviation, whatever as it came to us. Now some scholars, statisticians, they observed repeatedly the pattern. They found that there are some known patterns. If it looks like this, their property will be like this. So they have done some research and they have named some known distribution patterns in their name. Like Gauss has found and named normal distribution, and Bernoulli has given us binomial. Poisson has given us a distribution called Poisson distribution. There are so many distributions, so we'll be slowly discussing. Now, just to understand how we categorize the distributions, please recall the way we might have discussed variables. I think if you remember, variables are of two types. One is continuous variable, another is discrete variable. Have we discussed earlier the definition and distinction between types of variables? Any volunteer who can quickly tell me what we understand by continuous distribution and variable and discrete variable. Accordingly, we can extend it to the meaning of distribution. Any volunteer, Suyasi? Yes, also continuous as in the point, the decimal, it can be in decimals like height, like 5 feet 4 inches, and discrete as in the whole number. Anybody would like to supplement? Yes, sir. So continuous is there in a range. It includes range of values, whereas discrete is individual, distinct numbers. Yeah, I think both are correct, but what Suyasi suggested, all of you may note down, that would be better and more acceptable. And if it comes in exam, need to give examples. I think I have cited here example. So accordingly, if a distribution follows a continuous variable, that distribution will be called continuous distribution. And if a variable is discrete, the corresponding distribution will be called discrete distribution. Like say, for example, number of students absent today. It will be whole number always, right? So that will be discrete. Temperature, height, weight, all those things are examples of continuous variable, and the distribution that we may be fitting would be continuous distributions, right? Now, moving ahead, first we'll be taking up first one from discrete, that is binomial probability distribution or binomial theorem. And you may be happy, and I am also equally happy that this we have already indirectly covered before the mid-sem, binomial probability. Do you recall this? We had done this sambandh. If you are considering Yes, sir. n number of trials experiment, and if we wanted to find what would be the probability of getting exactly X successes, then that formula was given by probability of X equals to NCX Q to the power X Q to the power n minus X, where P is success probability, Q was failure probability. P plus Q equals to 1. What are the values of X, Supratik? So X value can be 0 to n. 0, 1, 2, 3. I think it can also be 1.5, 2.5. Sambandh? Sir, it is one continuous variable from 0 to n.
So it can be 2.5 also. 2.5 also. Yes, it can be. No, sir. No, sorry, sir. No, No, sir. sir. No, Whole sir. number sir. No, sir. has No, to be sir. a whole number. It doesn't include. Integer. भास्कर देख, तेरा दोस्तों का हालत देख. जी सर, So बहुत दिन से क्लास नहीं बना, सब भूल गए. out of 5 matches, someone 2.5 time success होगा. Suppose अगर someone marriage करेगा, शादी करेगा, children 2.5 children, 7.7 children, हो सकता है ना. अरे कुछ एग्जाम्पल जो है होल नंबर से ही होगा. ये डिस्क्रीट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है संबंध. Wake up, it is already 9:30 morning. सो रहा है. So now moving forward, now if it is a known distribution, then the benefit advantage is some of the values are computed and given to us. Unlike the case when we have computed mean formula, standard deviation formula earlier, here the formula is given, just put the value, you get the result. So mean of binomial distribution, all of you note it down, is just NP. And standard deviation of binomial distribution is square root of NPQ. Okay. Abhijit Devnath, is it possible to tell what could be possibly variance of binomial distribution? बोल सकते हैं? Possible variance, yes, sir. हो सकता है, बोल सकता है. Yes, sir. क्या होगा? ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया. सुबीर सर क्यों सवेरे सवेरे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं? देवेश, वेरिएंस का वैल्यू बता सकता है? Yes, sir. Square root हटा देंगे. NPQ. NPQ, only NPQ. ये अभी हाँ. देख बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं. तू भी जाग जा. अभी 9:30 बाद हो गया. सो रहा है तू. ये इनडायरेक्ट बीट क्वेश्चन बन सकता है. सो एग्जाम्पल में से आई थिंक दिस एग्जाम्पल वी हैड डन एर्लियर. किए थे देवेश? किए थे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लास्ट सेंटेंस है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पोर्शन है, शुभम अग्रवाल, लास्ट सेंटेंस है. हाउ डू वी एक्सप्लेन? Sir, assuming that 100, how many invigilators would you expect to report? Sir, X, जल्दी बोलो. sir, N हो जाएगा 10 और X हो जाएगा 3 or more than. व्हाट इज माय क्वेश्चन? लास्ट बीट देखो क्या होगा, बोलो ना एक्सप्रेशन. At most 3. एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? Means 0 से लेके 3 तक पर 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. P0 plus P1 plus P2 plus P3 ऐड करेंगे नहीं करेंगे? Yes, sir. वही बोलो. सो दैट वी हैड डन. ठीक है, जस्ट ए रिकैप. ये किए थे, अभी नहीं करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आई विल बी टेकिंग सम लेविन्स बुक सिंपल फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस and I'll ask randomly one by one. You have to respond. जिसको मैं पूछूंगा वही आंसर देगा. Look to the question. No prompting. I'll ask one by one. Shweta Ojha, then Sohini Majumdar in that order. Shweta, Yes, sir. first beat. हम कर सकते हैं. Can you help us? Please save time. जल्दी बोलना. Yes, sir. जल्दी बोलने का मतलब क्या है? नहीं बोलना. Sir, we can do. अरे यार तू ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले. आंसर बोलना. वी कैन डू. सौम्या बोल रहे. सौम्या वर्मा.
we will add P8, that is 12C8, then 0.458, 0.554. वाओ सैल्यूट सैल्यूट। मुझे दिख रहा है सर, सौम्या मैडम। श्वेता, कोट, व्हाट सौम्या टोल्ड, कोट और सेंटेंस, जल्दी बोल। अरे बोलना जल्दी। श्वेता, am I audible? सूरज सिंह, Yes, sir. अरे लास्ट सेंटेंस बोलना जो सौम्या बोली। सर फॉर्मूला में डाली सर। हाँ वही बोलना, बाकी लोगों को सुनाई दे, रिपीट कर। हाँ सर। सर ये वाला फॉर्मूला जो है सर NCX into QN minus X वाला फॉर्मूला यूज कीजिए सर। हाँ वैल्यू डाल के बोलना भाई, जल्दी बोल। अच्छा यस सर। तो ये हो गया सर N12 12C 4.5, उसके बाद 12C 4.5, उसके बाद 4.5 या 0.45, 4.5 या 0.45। हाँ सर 0.45 और फिर वापस 1 से माइनस कर देंगे क्योंकि P प्लस Q का वैल्यू 1 होता है तो 5.5। अरे बेटा 0.45 का पावर होगा ना, ठीक से बता यार। प्रतीक दास टेक ओवर, प्रतीक दास टेक ओवर, जल्दी बोल करेक्ट आंसर और फर्स्ट बीट, जोर से बोल, यू एड्रेस टू एवरीबॉडी। प्रतीक। ओके 12C 0.45, 12C 8, okay, 8, then P will be X will be, अरे यार क्या कर रहे हो सब। sorry, सौम्या फिर से रिपीट कर जल्दी, वी शुड सेव टाइम। सौम्या वर्मा। 12C8 ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन। सौम्या बोल फिर से। 12C8 into 0.45 raised to the power 8 into 0.55 raised to the power 4. Anybody having doubt? Anybody having doubt? Soumya, Yes. can you please repeat again? Yes. 12C8 into 0.45 raised to the power 8 into 0.55 raised to the power 4. क्यों हुआ ऋषभ? लास्ट फैक्टर क्यों हुआ? 0.55 कहाँ से मिला? टू द पावर 4 क्यों हो रहा है? सर पहले हम लोग P के लिए 0.45 इंटू रेस्ट टू पावर 5 लिए, एंड सेकेंड में 0.45 टू द पावर 8 हुआ। बाकी जो भास्कर दिखा रहा है, भास्कर को कोई देख रहा है, वो हेल्प कर रहा है हमें। तो बाकी जो 1 माइनस है 0.5 का 0.55 टू द पावर 4 होगा। भास्कर बेटा टेक ओवर, सेकंड बीट कैसे करेंगे? जोर से बोल, यू आर एड्रेसिंग एवरीबॉडी, जैसे सभी को पता चले। सेकंड बीट विल बी सर P5 प्लस P6 प्लस P7 ऐड करते रहते P12 भी जाना है हम लोगों को। रुक जा। सोहिनी भास्कर क्या बोल रहा है? तेलुगु तमिल में बोल रहा है, मलयालम बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक्चुअली यहाँ पे जो होगा सेकंड में जो 8 है, जोर से बोल। सो यहाँ पे 8 लेस देन 4 to 0 to the 3 जाना पड़ेगा, मतलब लेस देन कहाँ लिखा है? ग्रेटर देन 4 मतलब 4 ग्रेटर देन मतलब 5 to 12 जाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ अप टू 12, हाँ मतलब अलग अलग करके, मतलब 12C5 into 0.45 to the power एक बार 5 फिर 6 ऐसा करके जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा? कोलकाता, भुवनेश्वर से कोलकाता जाना पड़ेगा और ना दिल्ली? नहीं 12 उसका क्या है?
और कोई अल्टरनेटिव है? शुभम अग्रवाल, ये तो सही है जो भास्कर ने बताया, दैट इज करेक्ट. सोहन पटनायक, इधर एनी अल्टरनेटिव अप्रोच? सर उसको डायरेक्ट ये कर सकते हैं ना, हाँ, कॉमन सर सर, लेके। 1 माइनस करके वो चार्ट दो अगर वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल्सो ये भी लिख लो, ये जो है फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं. ये बीट क्वेश्चन में आ सकता है, सो आपको ये सब लिखना पड़ेगा. एनीबॉडी हैविंग डाउट, प्लीज फील फ्री, आस्क अस, आस्क भास्कर और आस्क भास्कर और बीट वन आस्क वाला, भास्कर. बीट बिना वन पानी, ए वाला सर. हाँ सर, बीट ए वाला ए वाला. डिस्कनेक्ट हो गया था सर. सौम्या, हाँ सर. बिना पानी को एड्रेस कर रहे सौम्या, 1 to 1. पी पार्ट 1 माइनस जो नहीं रे सौम्या, फास्ट बीट जो फर्स्ट. सर वहाँ तो फॉर्मूला डालना है ना, वो पी एक्स वाला. हाँ, इसमें वो NCX PX Q N माइनस एक्स वाला लगा है. तो इसके अंदर 12C8 इंटू 0.458 इंटू 0.55 रेज टू द पावर 4. क्यू क्यू वहाँ पे क्यू है, वो क्यू किसको लेना है? 0.5 क्यों आया? अच्छा अच्छा, ठीक है 1 ठीक है माइनस आया क्योंकि P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस ठीक है ठीक है. 0.545. भास्कर, सौम्या, जस्ट परमिट मी टू यूज व्हाइट बोर्ड. मैंने सोचा था कि सभी लोग को क्लियर है, जैसे कुछ लोग को डाउट है, सो लेट्स नॉट हैव डाउट, लेट मी टेक ओवर. बिना पानी, इज माय व्हाइट बोर्ड विजिबल? यस सर, यस सर. So what is the first bit question? P, सर पी आर इक्वल टू 8. sorry, P bracket R equal to 8. okay. So you write my pen is not working. Okay, either R or X, okay, it equals to 8. So can I write P8? Binapani, is it okay up to this? Yes sir. So what is the formula? Tell me formula. Sir PX equal to N is given 12, P is 12. Yes given sir. 0.45. 0.45. अगर P 0.45 होता है तो how much will be Q? 1 minus P होगा ना, 0.55 होगा ना. Yes sir. Clear? नहीं? Are you clear? Yes sir. Yes sir. So now you please expand the formula, Binapani. You have Sir, to tell me. PX equal to 12C8. Then P 0.45. Sir, I am not understand. Sir, Power 0.55. Say again. एक मिनट डेविड, एक मिनट रुक जा, आई विल बी रिपीटिंग इट. Binapani. 4.5 sir 0.45 to the power 8 into 0.55 to the power 12 minus 12 minus 8 मतलब 4 होगा ना. हाँ सर. वही सौम्या ने बोली थी. डेविड, अभी वो क्यू वाला डाउट था. हाँ डेविड. सर हाँ, ये जो फॉर्मूला याद है ना? ये सर. NCX P to the power X Q to the power N minus X, ठीक है सर. P Sir, I कितना है? understand, हाँ, but I am not understand is equal to 0.55. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे तो बोलने तो दे, अगर बोलने देगा तब तो बोलूंगा ना. P है 0.45, ठीक है. यस यस सर, ठीक है. जो Q जो है, Q एक्चुअली 1 माइनस P होता है. 1 से माइनस करोगे P तो Q मिलेगा. ओके सर. P प्लस Q इक्वल्स टू 1 ना. जी सर. अभी पता चला? यस सर, यस सर. Thank you for asking. Okay. Third beat. Any volunteer? Can I?
हाँ सर वो सुप्रतीक सेकंड बिट वाला जो 1 माइनस के सर 1 minus p of एक मिनट 1 रुक minus जा, p of एक मिनट रुक जा। सुप्रतीक दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर, जो जिनका डाउट है सेकंड बिट 1 माइनस वाला क्यों क्या बोल रहे थे सुप्रतीक, वो बोल, फिर थर्ड बिट कर सुप्रतीक। second bit sir is given that p of r equal r greater than 4 means r 5 means p of 5 6 probability of 5 probability of 6 to 12, so we can write it as p of 1 minus p of 0 p of 1 2 3 up to 4. आर So यू क्लियर? हु वाज आस्किंग? ये सर चिन्मय। हाँ ठीक ठीक, सुप्रदीप टेक ओवर, जल्दी कर लास्ट बिट। last bit side is given that p of r less than equals to 10 means we can write that p of 1 p of 2 to continue to p of 10. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, स्टॉप। आई थिंक सौम्या व्हाट सुप्रतीक टोल्ड इज करेक्ट। लंबा हो जाएगा वो, मतलब it'll get lengthy to calculate. p of 0 अरे to p जो of 10. बोला ठीक बोला नहीं बोला? हाँ, yes sir. तो हाँ बोली मतलब सौम्य को आलू मिलेगा, सुप्रतीक को भी आलू मिलेगा, दोनों को जीरो p मिलेगा। of 0 to 10 sir, p of 0 to 10 all. अरे सुप्रतीक यू हैड फॉरगॉटन p0। सुप्रतीक 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 सुप्रतीक, if you are forgetting 0, I will not forget 0, I will give you 0 in exam। सभी लोग ध्यान दो, वही भास्कर बोल रहा था। सो लेस देन इक्वल टू 10 मीन्स 0 से लेके 10 तक बहुत सारे टर्म्स है। हाँ बोल, अभी बोल। हाँ सर, और सर we can write it as 1 minus p of 11 and p of 12. वेरी गुड वेरी गुड। पहला वाला 0 छूट गया था, थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है? बाकी Yes, सब बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चिन्मय। चिन्मय 5.5 फर्स्ट बीट बोल, चिन्मय मलिक। Find the mean. Okay, sir. Let me read the question first. हाँ हाँ 16 p equal to p. So mu equal to n into p. 16 into 0.40 mu. ओके। हाँ फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। Then standard deviation is equal to npq into root over pq. तो सर q होगा 0.6, तो n 16 into 0.4 into 0.6 root over स्क्वायर। वेरी गुड, थैंक यू। सो बाकी ऐसे भी करेंगे, बी सी डी ई। एनीबॉडी हैविंग प्रॉब्लम? धनवी, यू आर देयर धनवी? Yes, I'm there. इट्स ओके, Sir, क्लियर? I was asking that. हाँ बोल बोल बोल। No, sir. Actually, I had a doubt. Like mu is equal to n into p. हाँ So we'll multiply n value into p value, no? हाँ 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 हाँ, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट 5.21 फर्स्ट बीट कैसे करेंगे? सुयासी टेक ओवर। यू हैव टू एक्सप्लेन टू द एंटायर क्लास वेरी क्लियरली, जैसे सभी को पता चले। Okay, so r is greater than equal to 1. So we'll be doing for 1, 2, 3, 4 for 1 to 8 trials. बेटर 1 माइनस दैट ना? Yes, sir. So better. दैट 1 इज minus जस्ट फाइंड p0, ठीक है? p0. Yes, sir. हर एक बीट में p0 ही निकालो, ठीक है? आर यू क्लियर प्रतीक दास? yes sir. p0 फॉर्मूला एक्सपांड करो। जल्दी बोलो भाई। Me अच्छा p0 होगा नहीं होगा? नहीं तो पास करना, टाइम वेस्ट मत कर। भास्कर टेक ओवर, भास्कर। Hello, sir. The P0 formula will be, sir, 8C0, 0 to the power 1 to the power 0 and 0 to the 0.9 to the power 8. Wow, all of you are clear. Sayam Agrawal, unmute कर Sayam. Yes, sir. Quote the last sentence of Bhaskar जो बोला फिर रिपीट कर दे। सर आवाज कट क्या है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज।
अरे यार फिर कैसे करेंगे? अरे भास्कर सुन, चैट बॉक्स में डाल दे, आगे करते हैं. Bhaskar will be writing that in chat box. All of you, those who are having doubt, please note it down from chat box. Okay, आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ा अप्लाइड एप्लीकेशन ओरिएंटेड न्यूमेरिकल सम करेंगे. और ये जो क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो, पहले मीनिंग डिस्कशन करेंगे. Don't worry about the answer. We'll be solving it together. Debesh, you have to start. Please, you help me. You have to tell us the meaning. Don't worry about the answer. I'll help you. Yes, sir. Please start. We can take it off. So here the question is, Diana Burns is the mayor of a large city. She has become concerned about the possibility that large number of people who are drawing unemployment are secretly employed. Means that the people are leaving the company and they're employing somewhere else. So her assistant estimate that 40% of the unemployment beneficiaries fall into this category. Like 40% of the people who are leaving the job are in this category. No. Sheetal Panikare, can you take over? Just tell me the meaning. है क्या? Problem क्या है? इशू क्या है? सर इशू ये है कि ब्रूम्स का जो असिस्टेंट था उसको बोला कि 40% जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो ले रहे हैं, मतलब जो टोटल जो बेनिफिट्स ले रहे हैं अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स, उसमें से 40% मतलब वो उसके अंडर नहीं जाते. वो एक्चुअली जॉब कर रहे हैं लेकिन वो बेनिफिट्स ले रहे हैं. तो ब्रूम that she didn't believe on him. So उसके बाद वो 10 randomly एक्सपेरिमेंट करता है और उसमें से प्रोबेबिलिटी, उसमें से क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी हाँ कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है और कितनों को बेनिफिट्स मिल रहा है. नहीं शीतल, मुझे ये पूछना है, सपोज यू आर द मेयर शीतल, विल यू बी वरीड? 2-4 लोग थोड़ा ले गए तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है? मतलब द बजट माइट हैम्पर. Can I give a try on your behalf if you permit me? Yes. जैसे इंडिया में होता है बेरोजगार भत्ता. बेरोजगार भत्ता किसको मिलेगा? जो बेरोजगार हो. ठीक है. जैसे इन उड़ीसा, those who are from Odisha, we have got so many Madhu Babu pension Yojana, Kaliya Yojana, God knows what Yojana kind of thing. And those you know, there are opposition, there is a hue and cry, and they are after the government कि आप लोग अपने आदमी को दे रहे हो. ठीक है, जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं ना, so one scheme, that scheme, so it is always in media. Suppose Sheetal or Soumya, you are the mayor of one area and you are tried in media कि ये जानबूझ के ये मैडम कर रही है. ठीक है, so your prestige at stake. अगर एक दो इक्का दुक्का कहीं होता है, you don't care, okay, you don't believe. ठीक है. 0.4 का मतलब क्या होता है श्रेयासी? 40%. 40%. There is a complaint, there is a press report. If 40% people are bogus beneficiaries, so 40% is very, very high. So naturally, if it is true, you should be concerned, and if it is fine, you should be. If it is correct, you will be fired. Are you getting my point? And you never believe how a case ho sakta hai. Under your nose, people are cheating you. So if it has gone up to 40%, it's really very, very serious thing. So what she has done, she is independently verifying it. So she has taken a sample and she is calculating. What is the first bit, Suyasi?
So more than 8 of the, like, the 10 among the 10 randomly selected unemployment beneficiaries, more than 8 if they are, like if the mayor's assistant is correct. So 10 में से 8 जने अगर मिल रहे हैं, शी इज थिंकिंग कि ये बहुत rampant हो रहा है. ठीक है, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? So now coming back to the question portion, Supratik Das, sorry to trouble you again. How do we express it mathematically if it comes in exam? First bit का first step sentence कैसे लिखेंगे mathematical expression जरिए? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस p 0.4 होगा और q होगा 1 minus 0.4 0.6 and it is given n equals to 10 out of 10 samples. It is given that what is the probability that more than 8 of individual will, so more than 8 means probability of 9 plus probability of 10. आंसर तो सही है, लेकिन एक वर्डिंग मुझे अच्छा नहीं लगा सुप्रतीक का. कौन सा वर्डिंग अच्छा नहीं लगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सुप्रतीक इज मेयर एंड ये करप्शन को सक्सेस मान रहा है वो. इफ यू आर राइटिंग इन द आंसर लाइक सक्सेस, लोग चोरी कर रहे हैं, ये सक्सेस तेरे लिए ना. When you are dealing with a case, you have to involve yourself. So don't use the word success, but your answer is correct. You will be getting full mark, but it is something like abstract. Don't use success. Chance of happening, okay, we can write that. Chance of happening is 0.4. All of you are clear? Devesh, can you summarize first bit only what Supratik has correctly told? What should be the first sentence of the answer? Just tell me the first sentence of the answer. Sir, I was saying that instead of saying success in employment, can we say that unemployment beneficiary is 0.4? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. नहीं आगे बढ़ो. मेरा क्वेश्चन है जो मैथमेटिकली एक्सपेंड करेंगे ना, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा वही मैं पूछ रहा हूँ. सर पहले तो px is equal to ncx p to the power x into q to the power n minus x. तो हमारा p हो जाएगा n हो जाएगा 10, p है 0.4, q है 0.6. तो 10 p 8. अरे यार देवेश तू you are behaving like a खांटी ओडिया. देवेश पखाड़ खाई सकाळू. You understand little bit of ओडिया? अरे यार सुप्रतीक ने बोला 8 बोला क्या? p8 बोला? देवेश नहीं सर p8 नहीं बोला. फिर तू p8 के ऐड किया क्यों? अरे p9 p10 ही होगा ना. सुप्रतीक फिर से बोल रहे. So p of 8, p of 9 plus p of 10. P of 9 is 10 c 9. 8 क्यों नहीं लेंगे? 8 क्यों नहीं? उसका तो देवेश का कंफ्यूजन है ना. You have to clarify the confusion. So it is given that probability that more than 8 means more than 8 is 9 and 10. So silly mistake मत करो यार देवेश. जो क्वेश्चन में लिखा गया है वही करो. ठीक है. Now next bit should be answered by Ashutosh Samal. You are there, Ashutosh? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बोल. At most 3 could have jobs. Means maximum 3. Our range would be 0, 1, 2. Yes, 0, 1, 2, 3. 3 होगा नहीं होगा? Probability of 0. हाँ हो जाएगा. Probability of 0, probability of 1. पक्का श्योर. 3 ऐड करेंगे नहीं करेंगे? At most maximum 3. अरे करेंगे. ऐड करेंगे. हाँ, be confident. Up to 3. 0, 1, 2, 3. ठीक है. Thank you so much. Easy question. Don't get confused. Should be done. I think this question, just note it down. This will be something like a standard indirect question, and somebody should remind me. I should take it up in the next class. And anybody, a good student, you can think it over how example number 3 can perhaps be solved. If some of you, at least 30% of you can solve it, I'll be really damn happy. But I'm not expecting all of you should be solving it. It's really a very standard question. I can take it up in the next session. Example number 3, just an optional assignment. Those who are interested can try at home. Okay, moving forward. This is where we'll be using normal table. Okay.
I can tell you normal distribution is the most important distribution among all the distributions which is in our syllabus and also which is not in our syllabus. Normal distribution is most important from exam point of view also. We should expect minimum 1 or 2 questions from this distribution alone. Normal distribution will be best explained by understanding the properties which we'll be discussing one by one. Please remember, we had introduced normal distribution is from the family of continuous random variable group or continuous distribution group. And please remember the distinguishing feature, the contrast when you're differentiating from binomial to normal. In binomial, we had only whole numbers and it was only positive number. Please all of you remember, here in normal distribution, the values can be negative, and as it is continuous, it can be fractional also. What is the last word written in that sentence, Bhaskar? Screen dekh raha hai, Bhaskar? Bhaskar का network issue है. हेलो सर, हेलो. हाँ. सर लास्ट पार्ट लिखा हुआ है सेंटेंस का कैन बी लार्ज. हाँ, लार्ज दिख रहा है, मुझे दिख रहा है. लार्ज का मतलब समझ रहा है? सर ये स्मॉल है. ये स्मॉल है, तेरे लिए ये स्मॉल है. यस सर. और ये भी तेरे लिए स्मॉल है. तो लार्ज का मतलब क्या है? सोमा, सोमा हैज अंडरस्टूड व्हाट इज अरे ये भी स्मॉल है भास्कर के लिए. 90 सर. मुझे तो पता नहीं, आप लोग को पता होगा. लार्ज का मतलब ये है, अरे इतना सवेरे सवेरे क्या हो गया आप लोग को. लार्ज में बोल रहा था इन्फिनिटी, मैं वो थोड़ी बोल रहा था जो भास्कर हंस रहा है. ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तो ही हो सकता है. एनीथिंग. बाइनोमियल में क्या हुआ था, 10, 12 ऐसे करके छोटा नंबर होता था. छोटा बड़ा भास्कर को याद है. ये जो है इट कैन बी एनीथिंग, 5000, 50,000, वेरी वेरी लार्ज अप टू इन्फिनिटी. ये है कंट्रास्टिंग फीचर. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर. नेक्स्ट पॉइंट इज, जो अगर हम प्लॉट करेंगे, द कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व विल बी perfectly symmetric and also a perfectly bell-shaped curve, and this will be called as normal curve. Okay, and please remember, we'll be showing you the normal curve just now. At center, mean will come, and this will divide the entire range into 2 equal portions. If the total probability of the total area is 1, both sides, left side of the mean will be 0.5, right side of the mean will be also 0.5. Okay, now this I'll be discussing bit later. Now next point is, as you may please recall, हमने एक एग्जाम्पल किए थे IQ क्वेश्चन वाला. You remember that? So उसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गिवन वैल्यूज किए थे, स्टैंडर्ड स्कोर निकाले थे. उस टाइम मैंने बोला था इसको हम डिटेल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाएंगे. सो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वन मोर प्रॉपर्टी इज, whatever values given original value, we have to or we can convert it as a standard score, standardization, and that formula is z equals to x minus mu by sigma. All of you please remember. Now here you please have a look at the normal distribution, and this at the center, here is the mean, and this side half portion 0.5, this side half portion 0.5. Now if you have intervals, please have a look here. Mu minus sigma to mu plus sigma, there is one interval. Mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma, there is another interval. And the last one is mu minus 3 sigma to mu minus 3 sigma, mu plus 3 sigma. In this area, almost everything will be contained. This is the beauty of normal distribution. चाहे x का value कितना भी हो,
if you can find mu1 standard deviation, within this range, 99.7% of the value will lie. This is what the property I was telling you. Now have a look here. I was telling that it is symmetric as well as normal perfect bell-shaped curve. Please see, I am showing you 3 symmetric curves. Just to tell you that all symmetric curves may not be normal, but all normal curves will be symmetric. I repeat, all symmetric curve may not be normal, but all normal curves must be symmetric. Now the lower one, which is a flat one, is also not normal, but it is symmetric. Okay? And the top one, which is a peaked one, though it is symmetric, it's not normal. Middle wala is the only normal curve. So have clarity now what we mean by normal distribution, normal curve. And there are few names of this type of curves. You need not worry, that may not come in exam. But if you check statistics book, the lower one, which looks flat, appears like a platypus, a creature called platypus. It is named as platycutic. Those who have done statistics is a kurtosis, and the flat one is called platycutic, and the top one is called leptocutic, Lepto Kurtic, cutic. And middle wala, there is no kurtosis. No kurtosis or mesocutic, MESO. Meso means nil. Mesocutic or no cutic, normal. So middle wala is called mesocutic or normal distribution. Okay, now I was saying the intervals. Now please all of you remember, if the interval is between mu minus sigma to mu plus sigma, the area will be 0.68 or 68%. These numbers we have to remember, dear. All of you need to note down the figures. If it is mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma, the area will be 95.5% or 0.955. And if it is minus 3 sigma to plus 3 sigma, it is 99.7%. Okay, just remember the formula. Now this is how we'll be now using the standardization. X value can be converted to Z. Please note down the formula. Z equals to X minus mu by sigma. Okay, all of you look, if mean is 50 and the lower line is Z, art center Z value will always be 0. I repeat, art center Z value will always be 0. And here 1, 2, 3, and here minus 1, minus 2, minus 3. These are the Z value. We'll be taking example. Give me 2-3 minutes, then it will be easier. Okay, let me skip this. Now I would request you, please open the normal table which was shared by Soumya. Can you please all check normal table? I think Soumya must have given. Soumya, you had given? Yes, sir. So we got it? Yes, sir. You also mailed us in the meeting. जो मैंने मेल किया था उसमें एक्चुअली एक टॉप में फिगर नहीं था. आई गेस सौम्या जो अभी अभी सर्कुलेट की है, टॉप में एक शेडेड एरिया एग्जांपल होगा शायद, है सौम्या? दो इफ यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम लेविन्स बुक एंड इफ यू हैव सर्कुलेटेड, टॉप में वैल्यू होगा. Yes, sir, it is. All of you are getting it? Ashutosh Samal, have you got the table? Yes or no? Jaldi bol. No, sir. Why no? Binapani got Yes, it? sir. Yes, Swayam yes, sir, got it? Swayam, yes or no? Sohini Yes, sir. got it? Yes, sir. All of you? Ashutosh, what happened to you? Abhimanyu Mukherjee, you got it? Abhimanyu, you are there? Yes, sir. Yes, sir. Anshuman Das? Yes, sir. Got it. Good.
So all of you should move together. Now please see, all of you check, the first column is called Z value column. Are you getting it? All of you refer yourself. First column is called Z value column. First row, only first row, is called mean difference column. Okay, that is also part of Z value. First column, first row, part of Z value. Okay. Now rest inside the table are called probabilities. ठीक है, बाकी जो figures है, all those are probabilities. Sohan Patnaik, Soibu, I came Arjun. Bring a glass of water, 2 glass of water, one for you, one for me. Okay, now please see, for every Z value, we have to find directly the probability. Now please see, normal distribution is very easy. You are not computing anything. It's a ready-made given available from the table. Now one thing all of you remember carefully, जो probability है वो center से लेके Z point तक का area है. जो एक example लेविन book में है, Suyasi, what is the Z value for which Levin has given us one example? Top में जो picture होगा, सूरज दिख रहा है? सूरज सिंह, 2.24 sir. सूरज सिंह 2.24 गेस करके बता सकता है? 2.24 गेस करके बता सकता है? कैसे देख सकते हैं? थोड़ा मैंने बताया नहीं. Can you guess and tell me? शायद if you can. Rishabh, time save कर. Rishabh Mishra, can you give us some help? Yes, sir. Tell yes or no. Don't waste time. Anybody not knowing, please save Sir, time. can I? Say pass. Yes, sir. We Sir, can can find I? it. Rishabh, 0.4875. no, I'm asking Rishabh Ray, Bhaskar. Rishabh, yes or no? So actually, I can't find that. अरे यार, you are not having a table. समय help Yes, कर. sir. अरे जेड कलम देखो ना, जेड कलम में 2.2 मिलेगा. 2.2 मिल रहा है. Yes, sir. और वहां से हॉराइजेंटली चलो, हॉराइजेंटली चलो. हमें 2.24 चाहिए. फर्स्ट कलम 1 डिजिट वाला दिखा रहा है. ठीक है, जो सेकेंड डिजिट है वही मेन डिफरेंस है. ठीक है, तो 2.24 इज हाउ मच? सुप्रतीक, So 0.4871. 7.1 है. 7.5. 5. Sorry, sir. Supratik, are you writing another book? Levin has written one book. Are you writing your book? So Rishabh, मिला value मिला? Rishabh. Yes, sir. Anybody Yes, having sir. doubt? बिना पानी, Yes, sir. बिना पानी. यस सर डाउट है. यस सर डाउट है वहाँ पे. डाउट है? तो वहाँ पे ऊपर वो ग्राफ मतलब वो टेबल में हमें ढूंढना है. सुयासी थोड़ा हेल्प कर. 1 to 1 बिना पानी को एड्रेस कर. Yes, Bina, Z का value is 2.24. It's given. So like Z वाले column में 2.2 वाले section में जाएंगे, and then we will move horizontally in the 0.04 वाला section. That 2.2 from the Z and 0.04 from the column. So in that particular इस row में देखना 0.04 के नीचे 0.4875 लिखा हुआ है. हाँ मिल रहा है? Right. मिल रहा है? हाँ सर. हाँ मिला. Helena, you are there? Yes, sir. Have you got it? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Then you tell me, what will be the Z value for 1.17? 1.17. 1.17. So first we will go to 1.1. Right. Then 0.07. Right. कितना है value? It will be 0.3790. Wow. All of you are clear? Asmita Chatterjee, Yes, sir. madam. Asmita Chatterjee, madam. Asmita, you are there. Yes, sir, I'm there. I'm having some network issues. So when Z value is 0.7, Z is 0.7, probability क्या होगा?
There is 0.7, so it will be 0.2580. Wow, all of you are clear. Manisha, Priyadarshini, Yes, sir. if it is 0.95, probability कितना होगा? 0.95. Sir, 0.3289. Wow, all of you are clear. Yes. Yes. Yes, sir. Anybody having doubt? Please ask us. Now we'll be having a lot of questions. Anybody having doubt can please ask us. So can you repeat last one, 0.95? Suyasi, can you just address one-to-one to Soumya? Suyasi. Yes, सौम्या 0.9 Z वाला जो कॉलम में है and 0.05 जो फर्स्ट रो में जो लिखा हुआ है ना 0.05 में 0.9 वाला में देखो वहाँ पे 0.3289 लिखा हुआ है. Thank you. Are you clear, Soumya? Yes, sir. Okay, all of you look to the screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Now all of you read the question. यहाँ normal table value I have given, but in exam it may not be given. You have to refer from the table. Okay. Abhi, okay. All of you, either you open the PPT or better you take a screenshot because I'll be using whiteboard. I have to stop sharing. Better all of you take screenshot. Can I stop it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now all of you remember, whenever we are getting a question from normal distribution, then you have to remember 4 or 5 points. Better if you can write this, though it is not mandatory, but I would suggest strongly that you should do this. Step 1, जो question में मिलेगा, what are the x values? You note it down. Okay. Second step, convert to z. Third, draw a graph. Fourth, refer normal table. Fifth, conclusion or answer. Is that okay? Now, So what is the fourth point? refer normal table. Okay, sir. Okay, Bhaskar, can you help me? Can you read out the question because I have stopped sharing? Sir, first point में क्या लिखा है? X values. From the question, note down x values. X का जो value दिया गया है, you have to note it down. Bhaskar, can you read out the question for me? If the average salaries of 500 shop is found to be 36,000 with a standard deviation of 10,000, then calculate the number of shops having sales over rupees 40,000. Given area under not. So is it, have I written correctly figure, Bhaskar? Have I written correctly? Given news value 30,000 standard deviation of. Yeah. Okay. So it is asked, find what this, can I write like this? Sohan, is it question given like this? Suyasi, can you write like this? Can you write like this? So, जो मैंने लिखा, that is x values I have collected. जो original value है x.
X is what? Can anybody guess? What is X here? What X The represents? shops, 500. Shop is X. X is what? Is my height, my weight, my salary? Number of shops. Number of shops. No. Sales, Sales, sales value. Sales in rupees. Sales in rupees. Don't forget the variable. Our variable here is sales of shops, right? Now, though this is the first question of normal distribution, I'll be happy if you can draw a normal curve and just show the area as per the question, which area we want to find. Are you getting my question, anybody? If 10% of you can draw it correctly, I'll be really damn happy. Give a try, show it to me. Anybody done? Just set the area. You have to set the area. Can you show it to me through your camera? It will be more than like it will be on the right side, like greater than 0.40. That like. You are asking me question or showing the answer? So I want answer. I want answer. So it's like, is it this like Show it clearly. this portion? Closer to the camera. Good. Thank you. Correct. Sambandh, you have done Sambandh. Closer up. Yes. Bhaskar nahi kiya? No, sir. My question is sir. Suyasi not getting? Sohon not getting? No, sir. I'm happy that some of you got it. Let me do it for you. Please see. We have done this. We'll be doing this too. Okay. I guess all of you should put mean value here. Bhaskar, it is okay up to this? Yes, sir. It's okay. Yes. So 40,000 will be on the left hand side? No, sir. Right hand side. Oh, you are awake. I was just checking. Okay. So 40,000. All of you write 40,000 here. Yes, sir. So more than 40,000 will be this side or this side? Side 1 or side 2? Side 2. Okay. So all of you said this. This is what I wanted from you. Sorry. Okay. Now these are X values. These are X values. So as you might have seen, parallelly, you can also have Z values. When X is 36,000, so we see what will be Z value here? Z का formula है X minus mu by sigma. Thank you, Suyasi. It will be always 0. And when X is 40,000, what will be Z here? 0.4. 40,000 minus 36,000. 0.4. It will be 0.4. Okay. Now ये हो गया. Next step क्या है सुयासी? सर नॉर्मल जो टेबल दिया है उससे रेफर करना. हाँ, रेफर करके बताओ. When Z is 0.4, वैल्यू कितना होगा? So 0.1554. So that is the answer, right? 0.1554 कहाँ लिखेंगे? Probability भास्कर टेबल से 0.1554 मिला. भास्कर सुन रहा है? So that value belongs to this area or this area? So this area. Area 1 or area 2? Area 2, sir. Area 1, sir. Area 1. All of you please remember, हमने बोले थे जो normal table दिख रहा है, that is from center to that place. Okay? हमें चाहिए shaded area सौम्या, but table दिखा रहा है
एरिया नंबर 1, समझ रहे हो? सो दिस इज एक्चुअली 0.155 कितना हुआ? सॉरी सर, हाँ 4. वो Z का वैल्यू है। तो नाउ कैन एनीबॉडी थिंक एंड टेल कैसे मिलेगा वो शेडेड एरिया? तो 1 minus 1.554. फिर से बोलो, सोच के बोलो। 0.5 minus 1. वाओ, शुभम अग्रवाल इज इन हाई वोल्टेज। देख सुप्रतीक, हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे रे, वन साइड इज 0.5 रे सुप्रतीक। ओह, यहाँ 0.5 होता है और यहाँ तक 0.5 है ना, यस सर, यस। तो 0.5 से माइनस करो, ठीक है भास्कर? कितना हुआ? 0.5 minus the value of 0.1554. कितना हुआ बोलना? 0.3446. Okay. Sohan, so this is the answer? Yes, sir. No, sir. So we Yes, sir. multiply with the number of shops. Multiply with the number of shop 500. ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। क्वेश्चन पढ़ो, मल्टीप्लाई बाय 500। समय कैलकुलेटर है, मल्टीप्लाई करके बोलो कितना हुआ? So 172.3. 172.3. पॉइंट रखेंगे या होल नंबर करेंगे? नंबर ऑफ शॉप्स शुड बी होल नंबर, सो राइट ऑल ऑफ यू 172 शॉप्स, ठीक है? हेलेना, कुड यू फॉलो हेलेना? और थोड़ा बाउंसर हो गया हेलेना। I'm stuck in 0.5. हाँ हाँ ठीक है। सुयासी, कुड यू गॉट हर डिफिकल्टी? No, Probability. sir. Actually, even I could not understand that 0.3446 part. ओके ओके। Sir, सुप्रतीक, 0.1554 वो वाला भी सर थोड़ा डाउट है। हाँ सुप्रतीक, शुरू से फिर से हाँ सर, वो सभी को एक्सप्लेन कर, एकदम वेरी क्लियर टर्म्स, यू एड्रेस टू एवरीबॉडी, जोर से बोल। It is given that mean equals to 36,000, standard deviation 10,000, and then we have to first find the value of x. It is given that the sales should be greater than 40,000. So at first we will take for 40,000 as standard. Then taking the 40,000 as x, we will find the value of z, standard score. Standard score 0.4 निकलेगा। अब standard score को normal table से देख के उसका probability area निकालना है। तो एरिया आएगा 0.1554, विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द, मतलब ग्राफ से 36 मीन से 40,000 तक ऑन द राइट हैंड साइड शेडेड एरिया, ठीक है? 40,000 वन पार्ट जो लिखा हुआ है सर ने जो लिखा है वो वाला, तब उसका एरिया का 1.1445। अब एक्चुअल एरिया है, मतलब निकालना है ग्रेटर देन 40,000 मींस द सेकंड पार्ट, and if to calculate the greater than 40,000 we have to minus the first part, number 1 part from the total right hand side. तो 1 part को total right hand side से minus करना है। तो अब सर ने पहले फॉर्मूला में दिखाया था टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा तो ईच साइड 0.5 और 0.5 होगा, तो टोटल राइट हैंड साइड का प्रोबेबिलिटी है 0.5। 0.5 से अगर 1 पार्ट माइनस कर दूं तो वो बाकी साइड निकल जाएगा 2 वाला। हेलेना, आर यू क्लियर हेलेना? स्टिल डाउट? तो Yes, हम sir. ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हाँ बोलो। सर वो बिना टेबल से वो टेबल से जो 0.4 से 0.1554 निकला वो वाला समझ नहीं आ हमने रहा। किए थे रे बिना पानी, जो प्रैक्टिस किए थे ना। फिर भी डाउट हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। Suyasi got the I think Suyasi was your teacher. बाकी हो गया वो The Suyasi जो टीचर बन के बोली थी वो ठीक से बोली नहीं। बिना पॉइंट को फिर से एड्रेस कर, 0.4 कैसे देखेंगे? सुयासी, वो टेबल बिना वो टेबल खोलो। हाँ वो टेबल में जो तुम्हारा z का वैल्यू दिया हुआ है एक साइड फर्स्ट कॉलम में, एंड ऊपर में रो में जो फर्स्ट रो है उसमें 0.00 करके दिया हुआ है। हाँ, तो अब तुमको किसका निकालना है? जैसे सपोज तुमको z इज इक्वल टू 2.24 का निकालना है, तो 2.2 तुम्हारा z में तुम देखोगे, एंड जो 0.04 है वो तुम फर्स्ट जो ऊपर वाला फर्स्ट रो में देखो 0.04 कहाँ पर दिया हुआ है, एंड फिर उस 0.04 में उसमें तुम नीचे आओ 2.2 तक, z का 2.2 तक।
एंड वहां पे जो नंबर जो क्लैश हो रहा है दैट इज द मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे 0.04 और 2.2 दोनों मीट कर रहा है, वो वाला पॉइंट इज तुम्हारा द वैल्यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी का कितना हुआ बीणा? So in this question, we got Z value is 0.4. Yes sir. So 0.4 का 0.4 का प्रोबेबिलिटी कितना? सर 0.1554। हाँ, वो दिख रहा है? हाँ सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में और बेटर होगा। Sir. So the number of shops is coming 172.3. So हाँ, what is it? 172 करेंगे, ठीक है? Okay. अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सुयासी, मुझे यू रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी सॉल्विंग इट। लेट्स टेक सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करेंगे। सभी लोग पढ़ो, ध्यान दो और एक एक करके सॉल्व करेंगे। आई विल आस्क रैंडमली। बेटर इफ यू कैन take a screenshot so that I'll be using whiteboard. Have you taken screenshot, all of you? Rishabh, have you taken screenshot? Yes, sir. Okay, so I am allowing multiple screen sharing. Can I trouble Bhaskar, if you don't mind? You have got a pen. Can you use whiteboard, Bhaskar, for all of us? First Bhaskar, then Suyasi, then Sohan, then Soumya. In that order, remember. अभी व्हाइट बोर्ड शेयर करके जो क्वेश्चन का जो मेन पोर्शन है उसको नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करो। लिसन टू माय क्वेश्चन। सुयासी विल बी सॉल्विंग फर्स्ट बीट ए, देन किसको बोला था? सोहन को बीट बी, बीट सी सौम्या। गेट रेडी। भास्कर को अभी देखो सभी लोग, भास्कर शेयर। So number of passengers in Mumbai or Pune Express is distributed normally with a mean of 500. And the standard deviation is 100. Calculate the probability of train leaving with more than 650 passengers. हाँ, more than 650 का एरिया सेट कर देना, जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे ना। डिटो वही है, तो व्हाइट बोर्ड शेयर करके थोड़ा एक्सप्लेन अदर्स। थोड़ा टाइम सेव करो, जल्दी जल्दी करो। So sir, given is mu is 500 and standard deviation is given 100 and we have to find sir p, that is x greater than 650. Very good. All of you note it down फटाफट। Draw a normal curve. So the curve will be like this. So and this is the middle value, so it will be 500 and 650 will be this side. So we have to find this portion. This is the x value. So sir, going to the z, we will get like this. This is the zero value, and this portion of the calculator net x minus mu is 650 minus 500. 1.5. Bina Pani, for 1.5, what is the Z value? Bina Pani. So sir, when Z is 1.5, what is probability? 1.5. 1.5 Z. 0.4332. Bhaskar, let 0.4332. 0.4332, which area? ग्राफ में कहाँ पर होगा? वेरी गुड। तो आंसर कितना होगा? आंसर ऊपर लेग, टॉप राइट हैंड मार्जिन में लेग 0.5 माइनस 0.4332 जो होगा वही आंसर है। थैंक यू सो मच, सैल्यूट। नेक्स्ट किसको बोला था? सुयासी, शेयर स्क्रीन। 0.0668। वेरी गुड। हाँ, स्टॉप शेयरिंग डियर, स्टॉप शेयर कर।
सुयासी जल्दी फटाफट सुयासी Yes, sir. you explain to everybody. So in the first that question, we have to find the probability of train leaving with less than 450 passengers. That means x is less than 450. So given Draw the that, graph फटाफट. All of you follow Suyasi. 500, very good. 450 will be here. yours z will be it will be Minus minus 0.5. Minus 0.5. minus 0.5 and from the graph. Which area? Set the area. Which area you want? नहीं सुयासी. So this will be the value of 0.5. No, And then in exam you have to show which area we want. Okay. Examiner will be in search of the area. ये हमें नहीं चाहिए. ये confuse होगा. All of you remember जो मैं बोल रहा हूँ वही करो. Shaded area means question में जो है, ठीक है. और सुयासी जो I think सुयासी understands. Let me take the permission of सुयासी and others please note it down. Z अगर नेगेटिव मिले डोंट वरी, इग्नोर नेगेटिव साइन. टेबल में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. सो 0.5 का वैल्यू आप लोग ले सकते हो बिकॉज इट इज सिमेट्रिक. जो व्हाइट एरिया है, व्हाइट एरिया का आरो डालो सुयासी. 450. हाँ, यहाँ का कितना हुआ? So 0.1915. Okay, so now the required area is how much? Anybody having doubt can ask me. Anyone? Anjali Sinha, you are there. Anjali, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. Okay, who is the next? So yes, stop it. Who is the next? Please take over quickly. Is it Sohan? Sir, actually, I was having doubt in that. Then Soumya take over. Soumya, give it a try. So mine part was सर 350 इसमें दो वैल्यूज हैं लेकिन. हाँ, मैं हेल्प करूंगा ना. तो अभी व्हाइट बोर्ड शेयर करे, जल्दी कर रहे. आई विल बी देयर. क्वेश्चन क्या है? वैल्यूज लिखो ऊपर और सेट द एरिया. मिडिल वाला 500 है. What is the question? Sir, the probability of train leaving with passengers between 400 and 450. Okay, 400 के वर्टिकल लाइन और 500 450 का वर्टिकल लाइन करो और बीच वाला को 350 and 600 ना, बीच वाला सेकंड वाला क्वेश्चन था ना. वो थर्ड बिट कर रही है. 430 वाला. ठीक है. You set the area. ठीक है. Now what is the next step, Soumya? Next step. Sir, Z value. हाँ, Z value निकालो. सर अब इसके अंदर हम लोग मीन माइनस करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो हम कौन सी वाली लेंगे? अरे Z value तो निकालना. मैं जो बोल रहा हूँ वही तो करना. 500 का Z value कितना? 0. 500 minus 450 by 100 लेना. अरे सौम्या तो सुन तो ले पहले. 0. बिलो 500 0 लिखना जो सोया से बोल रही है. और 450 जब 450 होगा तो Z वैल्यू कितना होगा? 0.5. माइनस 0.5. और 400 है तो अब कितना होगा Z? माइनस 0.1. सॉरी 1.0. 1.0. I'm so sorry. Not 0.1. 1.0. यहाँ ऊपर एक कर्व होगा. हाँ, 1.0.
अभी देखो 0.5 जब है जेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पूरा टॉप में लिख सौम्या, व्हेन जेड इक्वल टू 0.5 comma p equals to how much? श्रेयसी बोल दे। So 0.1915. 0.1915. सौम्या, you write that. श्रेयसी is helping you. Or when When z it's is 1, 1, 0.3413. 0.3413. Okay. okay, all of you stop writing, look at the screen. All of you requested, look at the screen जो सौम्या ने की है। अभी देखो फर्स्ट वाला जो 0.5 का जो प्रोबेबिलिटी है 0.1915, कहां से कहां तक? सौम्या, you know how to change color? Set Yes, कर। sir. Can you just draw one line? 0.1915 is this much. उसके ऊपर arrow mark करके connect to 1915. Very good. All of you are clear? Now 0.3413 कहां से कहां तक? सौम्या to answer. सौम्या, you try to answer me. 0.3413 कहां से कहां तक? Sir, somewhere here. अरे कहां से कहां तक? 500 to 0.5. अरे यार, you listen to my question dear. सुन ले। 0.3413 जो है सेंटर से लेके लास्ट पॉइंट क्या है? तो 400 तक होगा, तो 500 400 ना। कलर चेंज करके एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच। कैन यू शो कहां से कहां तक? यस, ये वैल्यू कितना हुआ? 0.34. ठीक है, अभी ध्यान दो सभी लोग ध्यान दो। सुयासी, जो ओरिजिनल शेडेड एरिया ग्रीन कलर में है वो कैसे मिलेगा? अभी दो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। बड़ा प्रोबेबिलिटी से छोटा प्रोबेबिलिटी को अगर माइनस करें, बड़ा प्रोबेबिलिटी से अगर छोटा प्रोबेबिलिटी को माइनस करें, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes, sir. Somya herself is confused. अच्छा सुन, this is actually a good question, standard question. Can you stop sharing? Let me take over. Please stop sharing. All of you, please look at here. Somya has done up to this. The probability she got 1, 9 कितना था सुयासी? So 0.1915. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी दूसरा प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, ये कितना मिला सुयासी? 0.3413. ओके, अभी देखो हमें यही चाहिए, ठीक है। सो दिस माइनस दिस विल बी दिस ना सौम्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the required probability, all of you write last sentence, required probability equals to 0.3413 minus 0.9. Is that clear? Yes, sir. So I'm just like summing up. Normal distribution का अगर न्यूमेरिकल सम हमको मिले, ध्यान दो क्या क्या वैल्यू इस क्वेश्चन पे है, नोट इट डाउन, प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, convert to Z, then set the area as per the question. Okay, then it will be clear. ठीक है? Now I think